वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मीन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बिकॉज जब अपने पास जो वैल्यूज दी होती हैं, हमको प्रोवाइड डेटा जो इस तरीके का होता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं, तो उस सिचुएशंस में जो होता है हम इस मेथड का यूज करते हुए मतलब हमको मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली जो है हमारे पास क्या क्या दिया रहेगा, देखो गिवन में हमारे पास ऑलरेडी क्लास मार्क ये ऑलरेडी हमारे पास दिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज द फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास ऑलरेडी दी होगी। और थर्ड है आपका सॉरी जो फर्स्ट जो है इट इज द क्लास साइज। ओके, व्हाट यू हैव टू से, इट इज द क्लास इंटरवल। ओके, यू कैन राइट हियर इट इज द क्लास interval. So you can cut over here. This is what class interval. So first is the class interval, second is the frequency, and third is the class mark. Class mark हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है जो कि इसमें लोअर लिमिट होती है प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. So 100 plus 250 150 it gives us 250, and when it gets divided by 2, अगर 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो वो simply get 125. और जो कैलकुलेशन होता है उसको और शॉर्ट बनाने के लिए नेक्स्ट क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि यहाँ पास डिफरेंस है, क्लास साइज कितना है, डिफरेंस कितना है इधर। यू कैन सी द नोटिस द डिफरेंस इज द 50 है ना, तो आपको 50 का डिफरेंस है। तो अब आपको बार बार वो कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली यू हैव टू ऐड द 50। तो यहाँ पास 50 ऐड करेंगे, सो आई विल गेट हियर 175 एंड देन 225 एंड देन 275 एंड फाइनली 325, isn't it? So here simply I've got the class mark. Okay, नेक्स्ट कंडीशन में हमको क्या फाइंड है, देखो कई लोग क्या करते हैं, पहले ना स्टेप जो डिविएशन होता है उसको फाइंड करते हैं, देन जो है यू फाइंड करते हैं। तो इट डिपेंड्स यू, आई थिंक जो आप पहले डी फाइंड कर लेते तो आपके लिए थोड़ा सा इजियर टाइप हो जाता है। तो डी फाइंड करने मतलब डेविएशन फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या होती है, ए की रिक्वायरमेंट होती है। ए मतलब जो अज्यूम्ड मीन होता है, जो कि हम मान कर चल रहे होता हूँ, तो इनमें से वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या लेती हूँ, फॉर द सेक ऑफ माई ओन कन्वीनियंस, मैं जो होती है कोई डिजिट वाली बीच वाली वैल्यू को तो प्रेफर करती हूँ, तो इसको ए देना, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन लाइक दिस। तो इसको आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट जो है आपको क्या लिखना है, डी, जिसका जो फॉर्मूला है इट्स ऑलरेडी कितना है, ऑब्वियसली दिस इज एक्स आई माइनस ए। ओके, ये आपको लिखना है। और जिस तरीके से ए ये रहा और एक्स आई को माइनस करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, -100, हियर -50, हियर इज 0, हियर इज 50 एंड हियर इज 100। ओके, इस तरीके से मिलेगा। अब यू जो मुझे मिलने वाला है यू आई, दैट इज वो क्या मिलेगा, इट इज सिंपली डी अपॉन एच। तो एच ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि 50 है, तो 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, दिस इज -2, देन हियर -1, देन 0, देन 1 एंड दिस 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग आपको फाइंड करनी है हियर इज द एफ आई यू आई, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। आई होप यू विल बी गेटिंग दिस। एफ आई हियर एंड यू आई हियर, तो 4 2s are 8, this is -8, 5 1s are 5, -5, 12 zeros are obviously 0, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो आप उसको एडिशन करने के बाद मिलेगा आपको क्या मिलेगा, समेशन एफ आई यू आई जो है -7 मिलेगा। यू कैन ऐड दिस एंड यू कैन गेट दिस वन। ओके ओके, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा लिख देते हैं कि लाइक गिवन क्या क्या है। तो ए मुझे ऑलरेडी पता है 225 है, एच पता है 50 है, and I am always already having fi, that is 25. Next is the summation of fi ui, it is minus 7, it's already given. Okay, now what you have to do, you know the formula of this fi, this is a bar, x bar, that is the mean, the symbol for the mean. So here the formula is this one, and here is sigma fi ui, and finally it's upon the summation fi, and finally into h. You just have to put over here the values, that is 225 and then plus, and then here you can put -7 and just divide this value by 25 and gets multiplied by 50. You can divide here directly. So here by dividing by 25, this is 20, this is of course going to be 2 times. Okay, so here is 225 and you will be writing 7 to the of course -14, here the minus sign, and here you will write 225 and here the minus and the 14 goes here, and the final answer that you will be getting is 211, and that's our final answer.
So this is how you have to find out the mean by using the step deviation method. I hope you'll be getting this. Of course यहाँ जो है बड़ी जो है small steps हैं, already कुछ fixed steps होते हैं already, ठीक है, क्योंकि you are already given the class interval, then fi it is also given, and what you have to write, first of all the main requirement is of course about the class mark, right? So here the class mark you have to find it out, and the second situation here is about the deviation. So this is all about deviation. For the in order to find out the deviation, आपके पास a होना बहुत important है, that is the assumed mean, isn't it? And simply you can get this. And secondly, next situation you have ui, and here this is very important point because you already have find. See, you could also find मतलब ui को आप directly find कर सकते थे, that is the d upon h, and d that is xi minus a upon h, right? बट क्योंकि मैंने एक स्टेप बढ़ाया है, इससे आपका क्योंकि एक मिस्टेक्स होने के चांसेस इट इज़ लाइक ज़ीरो, it becomes zero. That's why I have recommend you to go through this way rather than doing it in a simple on one step. Okay, and finally you have to just multiply this. And one of the most important suggested way I would say, like many students just do this mistake just because of these calculations. Here the calculation gets like complicated for those people, although it is not like that, but it happens sometimes. Okay, so here now next you have to do is just given whatever it is given, you have assumed this mean, and you are having h, you are having the summation fi and ui. This is also all about given. So you have to find directly, this is the all about the mean, you have to find it out. Okay, and I hope you have got this, and do tell me in comment section whether you have got any queries regarding this. Okay, thanks for watching.